So now let's start this new topic. The name of this topic is trigonometric equations. So this is the topic. This topic contains the two words here, trigonometric and equations. So the trigonometric word, we all are familiar with this trigonometric word and with this word equation also. Trigonometric means where we are using the trigonometric functions. जहां पे हम लोग trigonometric functions use कर रहे हैं. What are the trigonometric functions here? So we are using the 6 trigonometric functions: sine, cos, tan, sec, cot, cosec. Right? Now, what do you understand by this word equation in mathematics? So basically the word equation means a mathematical expression which contain this sign. कोई भी ऐसा मैथ का एक्सप्रेशन जिसके अंदर ये वाला साइन आता हो. And the name of this sign is equal to sign, or we can say that equality sign. कोई भी मैथ का एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर अगर ये साइन आ गया वहां पे इक्वल टू का साइन आ गया, सो दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन. इक्वेशन वर्ड यहीं से बना है, इक्वालिटी, इक्वेशन, राइट. सो वी कैन से दैट व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन इज, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which contain equality sign is called equation, right, is called equation. तो यहां पे वर्ड है trigonometric equations. और trigonometric equations का मतलब क्या हुआ? trigonometric equations का मतलब हुआ a mathematical expression which contain equality sign and which contain the trigonometric functions also. एक ऐसा mathematical expression जिसमें equal to का sign भी आता हो और trigonometric functions भी आते हो, that is called as trigonometric equations. And then this topic we are going to study in detail here. Let me write the example. Suppose यहाँ पे sin x है, sin x is equal to, suppose it is written 1/2. Is this equation? Is this equation? Yes, it is equation because it contains the equality sign. Is this a trigonometric equation? क्या ये trigonometric equation है? Yes, it is a trigonometric equation because it contains trigonometric function. अगर कोई ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें trigonometric फंक्शन भी आता हो और इक्वालिटी का साइन भी आता हो, इक्वालिटी के साइन से क्या हो जाती है? इक्वेशंस हो जाती है. सो दैट इज कॉल्ड एज trigonometric equations, right? So let me write the example of an equation which is not trigonometric. Suppose मैंने लिखा x square plus 2x plus 3 is equal to 0. So is it trigonometric equation? क्या ये equation है? Equation है ये? Yes. So trigonometric equation. Yes, it is equation but not trigonometric. So I hope you understood the meaning of the word, that the meaning of the name of the topic, the word used in the name of the topic, trigonometric equations, right? So now let's move forward. Look at this written on the screen. Anyone? Divya, could you please read this written on the screen? Yes. Trigonometric functions equations or trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations. In this section, we shall find the solutions of such equations. We have already learned that the values of sin x and cos x repeat after an interval of 2 pi and the values of tan x repeat after an interval of pi. The solutions of a trigonometric equation for which 0 is equal to x and x is less than 2 pi are called simple solutions. The expression involving which gives all solutions of a trigonometric equation is called the general solution. These symbols are to denote the Okay. सो यहाँ पे हमें 3 वर्ड इसमें दिए हैं जिनके बारे में बताया. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. क्या फाइंड करेंगे हम लोग इस टॉपिक में? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन होगी, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के. वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन
एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। इसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, and how to find out that solutions, principal and general solution. So we will discuss this thing in detail in the next class.